Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Some people have still not switched on their camera. They will definitely be removed from the class. These students are wasting others' time. And I'm not going to start the class unless and until everybody switches off his and her camera. But they do not know they're wasting their time. They're wasting others' time. तीन लोग हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, जिनको हम निकाल रहे हैं. प्रीति कुमारी, अहमद एंड रोल नंबर 30. ठीक है देन. आप देख रहे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपकी वजह से. आदत बना लेना बुरी बात है कि हम अपना स्विच ऑन नहीं करेंगे. नहीं करेंगे स्विच ऑन तो फिर definitely action will be taken. ठीक है. Nikita, I'm removing you. Yuvraj, I'm removing you. Chaliए, we're starting a new chapter for report writing. रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? कितने तरह का रिपोर्ट्स लिखा जाता है? What are the steps included in report writing? What are the rules and regulations of writing a report? क्या कोई बता सकता है कि रिपोर्ट क्या होता है? What is report? कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए कि रिपोर्ट क्या है, नहीं जान रहे हैं. What is report? Ma'am, I think a report is a statement that inform about something. अलका सिन्हा एंड सनी कुमार, रूम में रहना है तो कैमरा ऑन करो. ऑन है मैम, लाइट कटा हुआ है. So a report is something to inform. ये नहीं बोल रहे हो? Yes, ma'am. Report statement report होता है is जो inform करता है मैम. स्टेटमेंट है. किसको इन्फॉर्म करता है? क्या रिपोर्ट का पर्टिकुलर ऑडियंस होता है? मैम उनके कंसर्न जो भी होते हैं, मतलब कि उनके कंसर्न उनको रिपोर्ट करता है. जो उनके कंसर्न होते हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है. मैम जैसे मतलब कि जिसको चाहिए होती है, जो उनको रिपोर्ट करता है. उनको रिपोर्ट करने की बात नहीं. रिपोर्ट कितने तरह का होता है मैंने पूछा, और रिपोर्ट किसके लिए होता है, किसके लिए लिखी जाती है? क्या ये रिपोर्ट सबके लिए लिखी जाती है? एक रिपोर्ट लिखी गई तो इज इट फॉर एवरीबडी और इज इट फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस? आपके जो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था वो किसके लिए होता था?
मैम इंडिविजुअल कोई एक स्टूडेंट के लिए, मतलब ये सबका अलग अलग होता है मैम। नहीं, आपके रिपोर्ट कार्ड किसके लिए बनाई जाती थी? पेरेंट्स के लिए। उसको क्या कोई भी पढ़ सकता उसको? नहीं मैम, पेरेंट्स के लिए मैम। तो एवरी रिपोर्ट हैज अ पर्टिकुलर ऑडियंस। कुछ ऑडियंस होते हैं आइडेंटिफाइड होते हैं और कुछ होते हैं जनरल ऑडियंस। श्रेया सिन्हा, सब लोग ऑन किए हुए, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे ना? आप लोग क्यों बार बार क्यों बंद हो जा रहा है आप लोग का कैमरा? क्लास में आने का मतलब इंटरैक्ट करना, नहीं तो फिर रिमूव हो जाओ। मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ दैट यू नीड टू आंसर। तभी क्लास है, नहीं तो क्लास नहीं है। A report is a statement which is made for a particular audience. Sometimes the audience are general, किसी के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जर्नलिस्ट लिखते हैं, जर्नलिज्म में क्या होता है, एक रिपोर्ट रहती है न्यूज़पेपर में, उसके आइडेंटिफाइड नहीं है, उसके जनरल ऑडियंस है। For anybody who reads the newspaper. For example, if a pathologist makes a report, वो किसके लिए है? बताइए। आप कहीं ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कोई एक्सरे कराने जाते हैं, वो भी, उसका भी एक मेडिकल रिपोर्ट है, वो किसके लिए होता है? सबके लिए होता है क्या? नो मैम, जो पर्टिकुलर पेशेंट होता है जिसने करवाया उसके लिए ही होता है। नहीं, जो दिस रिपोर्ट इज फॉर मैम फॉर डॉक्टर। डॉक्टर के फॉर लिए द मैम। स्पेसिफाइड डॉक्टर जिसने करवाया है। एवरी रिपोर्ट हैज अ पर्पस। पेशेंट क्या जानेगा? पेशेंट को दे दिया जाएगा बस, दैट्स इट। उसको नहीं पता क्या एक्शन लेना है ना। Every report has a particular audience. Every report has a purpose. For example, your academic reports in school and colleges. उसके ऑडियंस कौन होते हैं? तो टीचर्स रिपोर्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, वो किसके लिए बनाया जा रहा है? फॉर द होल वर्ल्ड। पेरेंट्स के लिए जानने के लिए कि उनके चिल्ड्रंस कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बताना कि आपके योर सन और योर डॉटर किस सब्जेक्ट में क्या किया है, किस सब्जेक्ट में उसने पास नहीं किया है, किसमें अच्छा किया है, किसमें अच्छा नहीं किया है। So the total report is prepared with only one objective in mind. It has a purpose. कुछ लोग जो कैमरा बंद किए हुए हैं, डिस्पाइट माई टेलिंग देम अगेन एंड अगेन, दे आर कीपिंग द कैमरास ऑफ। इस बार बंद हुआ, विल रिमूव यू। क्या फायदा आने का? तुम रिया कुमारी, कभी भी कैमरा ऑन नहीं रहता है इसका। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। मैंने अभी क्या बताया, आप बताइए अभी। मैम अभी ज्वाइन किए हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है? मैम अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्लास स्टार्ट हुआ 3 बजे, तुम ज्वाइन किया 3:18 में। मतलब एज यू लाइक इट, जब मर्जी तब ज्वाइन करोगे। इससे घाटा किसको हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? तेरा, किसी का नहीं। There is a time for everything.
When the classes are starting at 3, you join at 3. You cannot hop in anytime you want to. कि जब मर्जी हाँ चलो आधे घंटे बचा है 10 मिनट बचा है ज्वाइन कर लेते हैं, अलाउड नहीं होगे. So what I said, a report is a document which has a specific audience, which has a specific purpose. हर चीज के पीछे वजह होती है. किसी नेबर के यहाँ, आपके नेबर के यहाँ अगर कुछ थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाती है, उस रिपोर्ट का क्या पर्पस है? विल द पर्सन रिपोर्ट? वो एफआईआर करेगा कि नहीं करेगा? Why don't you speak? ठीक है, तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं. क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जवाब चाहिए ना हमको. Should I end the class? Should I end the class? No, ma'am. Then why can't you answer what I'm asking? किसी के घर अगर थेफ्ट होती है तो वो एफआईआर करता है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखता है ना, लिखवाता है ना. उसका वजह क्या है, क्यों लिखाता है, पर्पस क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब किस किस क्या क्या चीज चोरी हुआ और मतलब किसने किया जनरली. किसने किया, तो उसका भी एक पर्पस है, राइट? प्लीज आंसर किया कीजिए क्वेश्चन. ये क्या कर रहा है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? लेट मी टॉक टू यू. ये है, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं. Are you in the class? Are you in the class or not? Yes, ma'am. तुम किससे बात कर रहे हो? No, You were ma'am. laughing and talking and nodding your head. If you're not in the class, you can do whatever you want to, and I'm removing you. No, ma'am. कर रहा है मैम. I may be stopping and asking questions. If you do not answer, it means you are not attentive. All right. I hope all of you can see the screen. Report writing. All reports are factual. इसका मतलब क्या होता है? फैक्ट पे बेस्ड होना. हाँ. Whatever reports you're making, it should all be factual, based on, it should be based on facts. इसमें कोई अपने imagination से आप नहीं लगा सकते. You cannot add anything of your own. You cannot add anything of your opinion. Whatever you are writing, it is all based on facts. And as earlier discussed, reports are documents which carry some vital information. Documents which is informative, which carry some vital information.
And these information is shared with a particular audience. It can be specified, it can be an identified audience, or it can be general audience. So it can be said that defined that as a report is the document a report is a document that carries or that presents vital information, important information, vital or important information to a defined or general audience. With a purpose so all reports are factual. It means all reports are based on facts. You cannot add anything of your own. You cannot add anything of your emotion or feelings. But you're only going to include things which actually happened. So another meaning is that reports are factual descriptions, step-by-step factual description. Reports are factual descriptions. It means step-by-step, which has there are 4 points included. Number 1, it is factual. Number 2, it has a purpose. Number 3, it has a particular audience, or it has a fixed audience. What do you mean by particular audience and fixed audience is the same thing? For example, people who read the newspaper, there's a fixed audience. People who listen to the news on TV, fixed audience, defined audience. Or sometimes it is also for fixed audience and of course for general audience, for everybody who reads the newspaper, for everybody who watches the news on TV. But then if there is a medical report, or if there is a research report or academic report, or if there is anything which calls for a particular audience, fixed audience, defined audience, then this is meant only for the person for whom you are writing to. So, like the example of a newspaper, the reporters write in the newspapers for people who read the newspaper. Enquiry reports. Supposing you go to 4-5 offices for collecting inquiry, you will come back and you will sit and compile
and make a report of whatever happened, whatever information you came up with. Reports for the police. If there's an issue, any concern, you report to the police, it has a particular audience. So examples can be newspaper, police station, inquiry, etc. I have others you already know, academic reports or reports for medical reports, any kind of reports. Now, supposing I ask you to make a report on any event you have witnessed, you have recently attended. For example, you have attended a workshop on communication, right? You have attended a seminar on communication, and you have to report it to your teacher. What are you going to include? तुमने एक सेमिनार अटेंड किया है कम्युनिकेशन का, ठीक है? It was a 3 days seminar and you have attended. And now you're supposed to make a report on that event, that seminar. What are the things you're going to write, Aryabhata? Are you understanding? I've Yes, given you ma'am. a situation. Yes, ma'am. Ma'am, first of all, I would mention the date of that seminar. What is the time interval each day? How many time? How long that seminar is going on, and the beginning of that 3 days, as you mentioned earlier, that it is for the 3 days. So I will mention that from which date begin and whatever thing I have learned during that seminar. What are the things that I have learned and how I am going to do that for the upcoming days in my academics or in upcoming days when I will start to work, and giving my juniors also advice that you should join such things. That's all. Okay, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि पहले तो actual details लिखेंगे आप. When it started, where it started, the date, the place, and who is writing it. So your front page should be a report on the seminar on communication. सबसे पहला page तो वो तुम्हारा रहेगा. The first page, written by your name, submitted to the person's name, and then you're going to write the details about it. When it started, where it started, it lasted. You have to prepare it. There are discussions also. What did you see? What did you learn? So you are going to include everything which you have witnessed. जिसमें आप अपने मन से कोई बात नहीं लिख सकते. लिख सकते हैं क्या? ऐसी जो चीज नहीं हुई वो आप लिख सकते हैं क्या? नहीं. You're going to include only the facts. Hello, can you see? Can you hear? Yes, ma'am. Yeah, okay. Yes, ma'am. Let's continue. So reports are factual description, which is step by step. तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तुम लिखोगी उस सेमिनार में सबसे पहले क्या हुआ, किसने क्लास लिया, सेकंड किसने क्लास लिया, कितने घंटे तक चला वो वर्कशॉप. So you're going to write it step by step. So what are the things you will take into account when you start writing a report? This is important, which you should write down.
It has to be factual. It means it has to be whatever is seen or whatever heard. Based on facts, of course. Do not add information on your own. It means do not imagine. It is not an essay. Number 2, it has to be indirect speech and passive voice. It was inaugurated by XXX, and it should be in passive voice. The speaker said that. You understand? Indirect speech and passive voice. Must be in third person. You're not going to use I, me. You have to be avoiding pronouns like I, me, you. So it has to be in the third person. It was seen that. It was heard that. So number 4 is avoid using pronouns like I, me, you. Use nahi karna hai. And 5th part, you have to answer the questions like what happened, where it happened, why it happened, what was it about, and who are the people who were involved, and lastly, how. All the 5 W's and 1 H. You have to follow these guidelines when you're making a report. Now, the format of a report. Sorry, format of a report. Ma'am, Yes. can we say that in this we use narrative writing style? Yeah. It was done. It was spoken. It was decided. It was inaugurated by the director said that, the speaker said that. अब यही कुछ बाकी रह गया था, है ना? कोई है जो पूरे क्लास को बदनाम करता है। यहाँ भी कुछ लोग आए थे क्लास में, ऑफलाइन में, बस तफरी करने, मौज मस्ती करने आते हैं। Next time, if I see you behaving like that, you may have to call your parents. और ऐसी बात नहीं है, अब क्लास में लोग आइडेंटिफाइड हैं। Some people only come to disturb others. They are not at all interested in anything else but to disturb. So we are talking about the 5th phase. All the WH, what, when, why, when, where, why, what, who, and how. Now let us come to the format. How will you write it? I did not discuss. Their reports can be accidental. You can make a report on anything which happens suddenly, or reports can be based on facts. And a planned report, it means something happened, it was planned, and you wrote a report. Accidental reports are something which happened on the basis of which you start writing. Let's talk about the format. As you saw that there are 14 parts of a letter. There are 7 parts of a report. What are they? Number 1 is the headline. Headline means the topic. What is your headline? Report on a seminar on communication. This is the topic, this is the headline. Second is the byline. It means kaun likh raha usko. On the left, you will write the date. And on the right,
you will write the reporter's name, your name. The third, on the left side, you will write the place and the date. It means Patna and the date of your report writing. And parallelly, on the same, on the right side, you will write your name. That is byline. The report is prepared by, you will write your name there. Number 4 is the opening part. The opening part is the introductory part. You are not introducing yourself. आप अपने आप को introduce नहीं कर रहे हैं. You are introducing about introducing the topic. Like a seminar on communication was held. So you have to introduce the topic, opening part. Why it happened, problem क्या है, क्यों ये seminar hold किया गया? What was the problem? What happened? Where it was done? And why? Why a seminar, a seminar on communication? Where it happened? When it happened? And what happened? But number 5 is the middle part of the detailing. You write in details of whatever happened. And here in detail, you are answering. Again, when, what, where, who, and how. किसने class, किसने arrange किया, किसने. The names of people who presented, made a presentation. So you have to do the detailing in the 5th part. How was it carried out? Who were the presenters? And the 6th is the conclusion. It means what is your takeaway from the entire seminar? Like 5th में आप बोल सकते हैं, first day this happened, second day this happened, third day. You have to write the details so that the person who has not attended the workshop, he will come to know, okay, what all happened there. So you're giving some vital information to people who have not attended. So you will not have to miss out any point, any relevant point. Aapko miss nahi karna. Supposing they have 6 speakers, those speakers each day, and there were some students who also presented. You will have to write the names of all the people there, designations, right? Number 6 is the conclusion, conclusive statement. What should be the conclusive statement? It means what is your takeaway from the entire seminar? How is it going? How has it benefited? How it is going to be beneficial? So, in a crux, such seminar should be held periodically. इसमें आयु भी लिखना नहीं है, आप general लिख third person में, which can be beneficial for one and all. You are writing as an outsider. इसमें I, you, we नहीं करना, all indirect speech करना है, all passive voice करना है. In a case, the speaker said that I want to make a presentation on such and such thing. No, the speaker said that he is going to do this. और नंबर 7 आता है बॉक्स. ये बॉक्स क्या होता है? पूरी रिपोर्ट लिख करके हेडलाइन तो मिडिल में रहेगा. It should be the center page. Byline, right side. Date, left side. Leave a space and start writing the opening paragraph, introducing the topic, the detailing, and the conclusion. And the conclusion. And put it all in a box. Box क्या होता है? What is box?
बॉक्स क्या होता है? ये होता है बॉक्स। सारा का सारा रिपोर्ट बॉक्स के अंदर। Understood? So if the question is, what is the format of a report? Don't give me stories and narrations. I want facts. Do not write narrative style and argumentative style. Huh? You're not trying to convince me. But this is, what is this? This is the expository writing style. Isn't it? When you are informing, when you are explaining, right? Any question? यहाँ आप देखिए, हेडिंग या टाइटल, डेट एंड प्लेस एक तरफ, बाई एक तरफ, ओपनिंग पार्ट, details and concluding part. It should not exceed more than 150 words. And this is a report. देखिए box में है ना? It is in a box. पढ़िए क्या report? This is a report on flood relief measures. Patna, October 4, 2019, by Santosh Kumar. Somebody read this. You will understand the opening part, the middle part, and the concluding part. Read someone. There are 30 students in the class and nobody is reading. Read someone. A report on flood relief measure. Due to heavy rain for the last 3 days, the low-lying areas of adjoining areas were submerged in water, causing great damage and inconveniences to the people. All links were disrupted, making life miserable as people were forced to battle for bare necessities. Rescue camps have come up to aid the people suffering from the disaster. The government and other social agencies were working around the clock to rescue those in need with food packets, medicines, and all necessary amenities. Amenities. There was no loss of life. Amenities. जितने सारे वर्ड्स जो नहीं समझ रहे हैं उसको एक वोकैबुलरी बना लीजिए पहले आप. Write down the words which you do not understand. There was no loss of life, which is saving grace. जितने भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं इसमें make a list of words. हर एक अलग अलग होने चाहिए. It is not that the same words will be written by everybody. मैम एमिनिटीज का मतलब फैसिलिटीज ना?
एमिनिटीज का मतलब फैसिलिटीज में मैम जरूरत की चीजें। There can be words which you may have not understood. Write them down. We are going to continue this in the next class. I hope this layout you understood. Any questions on this? Any questions? Hello. Yeah. Yes, ma'am. As it was mentioned there that in important point, and it was the third point that must be in the third person. If we talk about the blood report, so how can you include the third person in such type of report? किसी के बारे में नहीं कहा गया ना, third person. The writer has not used I. The writer has not used सपोज दैट you. मैं ब्लड रिपोर्ट को यूज कर रहा हूँ, ब्लड रिपोर्ट को मैं डॉक्टर को दे रहा हूँ, या कोई भी डायबिटीज की रिपोर्ट को डॉक्टर को दे रहा हूँ, तो उसमें मैम ये थर्ड पर्सन कहाँ से आएगी फिर मैम? थर्ड पर्सन के बारे में है ही नहीं ना, जो रिपोर्ट बनाएंगे वो आई यू करते हैं क्या? रेफर्ड बाय डॉक्टर सो एंड सो, ये भी लिखते हैं बाय रेफरेंस, योर रेफरेंस। पेशेंट्स का नाम रहता है और क्या क्या फाइंडिंग्स रहता है। तो अगर मैम उसमें अगर थर्ड पर्सन, मैम अगर उसमें अगर थर्ड पर्सन होगी तभी मेंशन करना, अगर नहीं है तो फिर नहीं मेंशन करेंगे। नहीं, आई यू वी नहीं लिखना है। दिस एनी रिपोर्ट, इन एनी रिपोर्ट आपको आई यू वी दे कुछ नहीं लिखना है। तो ये जो रिपोर्ट पढ़ा आपने वो क्या था? उसमें आई था, यू था, वी था। दिस इज फॉर जनरल पब्लिक कि इस तरह का हुआ था, एंड इस तरह की जो फ्लड के बारे में बात हो रही थी वो लिखा गया। उसने ये नहीं लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, आई है यू, द पर्सन हैज रिटन ऑन अ थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन बन करके वो लिख रहा है ना, जो भी लिख रहा है। ये संतोष कुमार इज राइटिंग एज अ थर्ड पर्सन, somebody who goes and sees as a third person. उसने गया, उसने देखा और फिर उसने वो रिपोर्ट तैयार किया as a third person. ठीक है? तुम थर्ड पर्सन समझे नहीं। तुम थर्ड पर्सन मतलब होता है एज एन आउटसाइडर, इसलिए आई यू वी दे नहीं होता। Like many students attended the blood donation camp at CIMAGE College. तो उसमें हम एज अ थर्ड पर्सन लिखेंगे ना, I saw that this was happening and you saw that that happened. नहीं, I will be writing it as a third person. It has been seen that. मैंने देखा है कभी नहीं होता है, ये देखा गया है कि it has been found that. ठीक है? Third person means you are writing a report as an outsider. And this can be for a specific audience, or it can be for a general audience, or it can be for a defined audience. We will talk on this in 4 to 5 classes more. And then the last chapter is job applications.